Hello students, welcome back. We will continue our previous topic, application of derivatives. In application of derivatives, today we are going to see increasing and decreasing functions. When the function is increasing, if f dash x is greater than or equal to 0. When the function is strictly increasing, or you can say monotonically increasing, if f dash x greater than 0. When the function is decreasing, if f dash x is less than equal to 0. When the function is monotonically decreasing, if the function f dash x less than 0. Now what is the first question here? Now see, test whether the following functions are increasing or decreasing. Okay, इतना ही हमको दिखाना है, increasing और decreasing. First question I have written here. fx is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16. इसको सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है. तो fx से क्या मिलेगा? f dash x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. fx का डेरिवेटिव f dash x. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6 आउटसाइड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 6 इंटू 2x 12x प्लस 12 x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 0. सो इट बिकम्स माइनस 0. यू कैन टेक 3 कॉमन. ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 3 4 जार 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. इजंट इट? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. किसका स्क्वायर है? दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2. सो दिस बिकम्स 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. वी नो दैट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. x since x minus 2 whole square is greater than 0 for x is not equal to 2. Therefore 3 into x minus 2 whole square is also greater than 0. 3 into x minus 2 whole square greater than 0 means f dash x is greater than equal to 0. Okay, we can say greater than equal to 0 or greater than 0. Hence, the function fx is an increasing function. The function fx is an increasing function. Why? F dash x is greater than equal to 0, or simply you can write f dash x is greater than 0. Okay, now second question. fx is equal to x minus 1 upon fx is equal to x minus 1 upon x. X belongs to R and x not equal to 0 and x not equal to 0. Okay, now differentiate this. Differentiate with respect to x. क्या आएगा? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो माइनस माइनस क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1. Okay, for x greater than 0. Okay, since x greater than 0, x square is also greater than 0. Therefore, x square plus 1 is also greater than 0. Therefore, x square plus 1 upon x square is also greater than 0. The whole term is greater than 0. F dash x is greater than 0.
Yeah, you can write f dash x greater than or equal to 0. The function fx is an increasing function. The function fx is an increasing function, isn't it? Okay. If the f dash x is less than 0, then function is decreasing. Okay. Now we take the next one. Next question. Question number 2. Any doubt in first and second question? Anything else? Simply we are differentiating and write down the condition f dash x is greater than 0 or greater than or equal to 0. The function fx is an increasing. Now take the next question. That is our question number 2. Question number 2. Find the values of x for which, question number 2. Find the values of x. Find the values of x for which the following functions are strictly increasing. Following functions are strictly increasing. This is the question. First question. fx is equal to x cube minus 3x square minus 12x plus 6. Okay, here we have given that the function is strictly increasing. fx is given. We have to find the value of x. x की value आपको find करना है. Okay, what is the given condition? The function is strictly increasing. It means that f dash x is greater than 0. So first of all we have to differentiate this function with respect to x. इस function को differentiate कीजिए पहले, तो आपको f dash x मिलेगा. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. क्या आएगा f dash x? f dash x, 2 outside, x cube का डेरिवेटिव 3x square, 3 into 2 6x square, 3 into 2 6x minus 12, x square minus 6x minus 12. ओके, इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा? x square minus x minus, क्वेश्चन देखिए बराबर है क्या? 3x square 2x cube minus 3x square minus 12. Okay. Now write down the condition. So this will be 6x square minus x minus 2. Okay. Now factorize this. Factors of minus 2. That is 2 ones are 2. So it is minus 2 plus 1. So this becomes 6 into x minus 2 x plus 1. This is the value of f dash x. Minus 2 ones are minus 2. Minus 2 into 1 is minus 2. Middle term is minus, so this is minus 2 and plus 1. Isn't it? Now write down the given condition. Given that, what we have given? fx is strictly increasing. Strictly increasing function. Therefore, f dash x is greater than 0. What is the value of f dash x? 6 into x minus 2
एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ये कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। जीरो अपॉन सिक्स इज जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर देन जीरो। व्हेन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव। If both the terms are positive, then their product is positive. Otherwise, if both the terms are negative, then also their product is positive. So case first. What is the case first? Here condition is x minus 2 greater than 0, x plus 1 greater than 0, or x minus 2 less than 0, x plus 1 less than 0. These are the two conditions. Case first. What is the case first? X minus 2 greater than 0, x plus 1 is greater than 0. From this we can write x is greater than 2. Here is x is greater than minus 1. अभी इनमें से आपको एक ही चूज करना है। नंबर लाइन देखिए, दिस इज द नंबर लाइन origin, this is minus 1 minus 2 like that. Here is minus infinity, here is plus infinity. Okay, 1 2 3 like that. X greater than 2, x greater than 2 means this set. Okay, ये सेट होगा x greater than 2, x less than minus 1, ए सेट होगा x ग्रेटर देन 2, विच इज द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट कौन सा है? अगर सपोज यहां पे नंबर लिया 10, तो 2 और 10 के बीच में कितने नंबर से 8। यहां पे सपोज 10 लिया माइनस 10, तो नंबर कितने 9। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? दिस वन। दिस इज द स्मॉलेस्ट सेट, नॉट स्मॉलेस्ट नंबर। देयरफॉर x is greater than 2. Therefore, x belongs to infinity. Okay, case second. What is the second case? X minus 2 less than 0, x plus 1 less than 0. This is x less than 2, x less than minus 1. Sorry, this is both are negative na. Sorry, this is positive. A set smallest है x greater than 2. Both are greater than 0. X greater than 2, A set. X greater than minus 1, A set. A set बड़ा है, A set छोटा है. Therefore x is greater than 2. Okay, अभी x less than 2. x लेस देन 2 तो इस तरह से होगा, यहां से होगा ये x लेस देन 2, x लेस देन माइनस 1, ये होगा माइनस 1 यहां से। तो स्मॉलेस्ट सेट कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट वन? स्मॉलेस्ट सेट इज x लेस देन माइनस 1। thus x is less than minus 1. therefore x belongs to minus infinity minus 1. लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी। हेंस x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी माइनस 1. ओके, इफ fx is an increasing function. If the function fx is an increasing function, then x belongs to infinity union minus infinity minus 1. Isn't it? This is the condition. Do you understand? Okay. Now चलिए one more sum लेते हैं, which is also similar. सिर्फ नंबर बदलेगा, बाकी तो सेम रहेगा. Okay.
इसको रफ कर देता हूँ. सेकेंड क्वेश्चन, fx is equal to x cube minus 6x square, x cube, second question, this is the second one, x cube minus 6x square minus 36x plus 7. Question is same, the function is strictly increasing. Question same है, are strictly increasing. Okay. Now differentiate this. Differentiate with respect to x. What is the given fx? Fx is equal to x cube minus 6x square minus 36x plus 7. This is the polynomial equation. By using the first formula of derivative, we have to differentiate this. x cube का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x square. 6x square का डेरिवेटिव क्या आएगा? 12x. 36 माइनस 36x का माइनस 36x का डेरिवेटिव 1 प्लस 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. इसमें से कॉमन क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3 1s are 3 2s are 12, 12 3s are 36. Now factorize this. Here fx का डेरिवेटिव f dash x माइनस 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? माइनस 12 के फैक्टर्स. Middle term is minus 4. 6 2s are 12. So this is minus 6 plus 2. So factors are 3 into x minus 6 x plus 2. Isn't it? Condition is given same. According to given condition, fx is strictly increasing function. Fx is strictly increasing function. Therefore, f dash x is greater than 0. Therefore, 3 into x minus 6 x plus 2 greater than 0. Greater than 0. 0 upon 3 क्या होगा? 0. So therefore x minus 6 x plus 2 greater than 0. Product is positive. When the product is positive, if both are positive or both are negative, product of positive numbers is always positive. Product of two negative numbers is also positive. So first condition, x minus 6 greater than 0, x plus 2 greater than 0, or x minus 6 less than 0, x plus 2 less than 0. Okay, case first. What is the first case? X minus 6 greater than 0, x plus 2 greater than 0. Both are positive. From this, ये क्या आएगा? x greater than 6, ये आएगा x greater than minus 2. नंबर लाइन से आपको चूज करना है which is the smallest set. Okay, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दिस इज नंबर लाइन. ये होता है इन्फिनिटी, ये होता है माइनस इन्फिनिटी. यहाँ पे होगा ओरिजिन 0 ओ 0 समझो. x ये यहाँ पे नंबर होगा 6, यहाँ पे होगा सपोज -2. पहला कंडीशन है x ग्रेटर देन 6. दिस वन, ये x ग्रेटर देन 6, ये सेट है. x ग्रेटर देन 6, ये सेट. दूसरा सेट है x ग्रेटर देन -2, ये सेट. यहाँ से ये सेट है x ग्रेटर देन -2. सो विच इज द स्मॉलेस्ट सेट? सेट कौन सा छोटा है? x ग्रेटर देन 6. ये सेट बड़ा है. देयरफॉर thus x is greater than 6. Therefore x belongs to 6 infinity. Last number is infinity. Case second. What is the second case? X minus 6 less than 0, x plus 2 less than 0. इससे वैल्यू मिलेगा x का 6, x less than 6, और इससे मिलेगा x less than -2. Okay, now see x less than 6 यहाँ से
ये सेट है x लेस देन 6। दूसरा सेट है x लेस देन -2, यहां से ये माइनस इन्फिनिटी यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। x लेस देन 6 सेट बड़ा है, x लेस देन -2 ये सेट छोटा है। सेट का नंबर यूज करना है आपको, सेट स्मॉलेस्ट सेट। thus x is less than -2, therefore x belongs to -infinity -2, hence therefore x belongs to, पहली कंडीशन है 6 इन्फिनिटी का -infinity -2 यूनियन 6 इन्फिनिटी। The function fx is an increasing, the function fx is strictly increasing, strictly increasing if x belongs to -infinity -2 union 6 infinity, isn't it? एनी डाउट? पहले आपको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वाई अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद ये दो ब्रैकेट आपको मिलेंगे। वी नो दैट product of two positive numbers is always positive, product of two negative numbers is also positive। तो पहले कंडीशन लिया दोनों पॉजिटिव, फिर कंडीशन लिया दोनों नेगेटिव, केस फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू आया। इसमें से आपको स्मॉलेस्ट सेट चूज करना है, तो स्मॉलेस्ट है x ग्रेटर देन 6, इसलिए एक ही x का वैल्यू लिया, x ग्रेटर देन 6, 6 के आगे लास्ट वैल्यू कौन सी है? इन्फिनिटी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 6 इन्फिनिटी। सेकेंड केस ए लिया, यहां से दोनों वैल्यू है x लेस देन 6, x लेस देन -2, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? x लेस देन, स्मॉलेस्ट सेट x लेस देन -2, तो यहां से आपने लिखा है x बिलोंग्स टू -infinity -2, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -infinity -2 यूनियन 6 infinity if the function fx is strictly increasing, isn't it? Any doubt? Okay, we'll take next sum in the next video.